हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, emotions through writing, behavior, signals. In this process, a sender encoder encodes the message through medium or channel, and decoder decodes messages, and after processing information, decoder sends back appropriate feedback through medium or channel. इसको मतलब ऐसे समझे तो ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। अपना इमोशंस को एक्सचेंज करना, फीलिंग को एक्सचेंज करना, थॉट्स को एक्सचेंज करना, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, कम्युनिकेशन कहलाता है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें सेंडर इनकोड करता है मैसेजेस को थ्रू मीडियम और चैनल, और डिकोडर डिकोड्स करता है मैसेज को, फीडबैक देता है आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। डिकोडर सेंड्स बैक appropriate feedback through medium or channel. Then following are the main steps or process of communication. Number one, द पर्पस और रीज़न फॉर द कम्युनिकेशन। उसका पर्पस क्या है, रीज़न क्या है कम्युनिकेशन करने का। द कॉन्टेंट्स ऑफ द मैसेज, मैसेज का कॉन्टेंट। द मीडियम यूज्ड फॉर कन्वेइंग द मैसेज, एग्जाम्पल इंटरनेट, रिटन टेक्स्ट। देन ट्रांसमिटिंग द मैसेज, messages are often misinterpreted due to external disturbances such as noise created by humans, traffic, natural forces, and consequences of it are miscommunications. Noise जो है वो मतलब मिसकम्युनिकेशन है, created by humans, traffic, natural forces. ठीक है, receiving the message, then decoding of the message. ठीक है, process of communication. Sender, then it goes to encoding. Sender encode करता है मैसेज को, मीडियम या चैनल रिसीवर के पास जाता है, और रिसीवर फिर मैसेज को रीड करके उसका फीडबैक देता है। फिर वो मीडियम और चैनल का यूज़ करके सेंडर तक अपना फीडबैक को पहुंचाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिकोड करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स या बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल हो गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल हो गया वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। Verbal communication refer to such communication which involve the use of words, languages, जिसमें कि words और language का use होता है for delivering the intended message. The term verbal means spoken words. Verbal communication categorized into two ways. फिर इसको classify किया गया है two parts में. Number one, written communication. Number two, oral communication. Written communication refers to such communication where information and messages where
Written communication refers to such communication where information and messages are delivered through written mode या medium. एंड रिटेन कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर्स, इसमें लेटर आ जाता है, ईमेल आ जाता है, हैंडबुक आ जाता है, एसएमएस आ जाता है, चैट आ जाता है, रिपोर्ट्स आ जाता है. एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकेबुलरी. ठीक है, ये सब पर डिपेंड करता है रिटेन कम्युनिकेशन. राइटिंग का स्टाइल पे, आपका ग्रामर कैसा है, वोकेबुलरी कैसा है. Then next is oral communication. Oral communication refers to such communication where information can be exchanged and interact with people and communicate through spoken words telephonically. मतलब जो कि टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा यूज़ किया जाता है. फेस टू फेस कम्युनिकेशन, गॉसिप, मीटिंग्स, सेमिनार्स एक्सेट्रा. The effectiveness depends upon the clear speech and the tone used by speaker. It is very easiest, fastest and most successful form of communication. Non-verbal communication. Non-verbal communication is the process of communication by sending and receiving wordless messages. With the help of these communication, thoughts, feelings, emotions are expressed very easily. Physical nonverbal communication. Physical nonverbal communication includes on individual body language. इसमें मतलब पर्सन का बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, टोन ऑफ वॉइस, touch. Physical signals. Other physical signals are physical non-verbal communication. For example, acceptance and interest in these communication messages are delivered on conveying without using any words. Paralanguage. The way of say something more than actual word used. Reveal or disclose the intent of message. It includes the voice quality. इसमें वॉइस क्वालिटी आ जाता है, स्ट्रेस, इमोशन, टोन, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ये सब आ जाता है. एस्थेटिक कम्युनिकेशन. पार्टिकुलर मैसेज और इंफॉर्मेशन आर कॉन्वेइंग थ्रू द मीन्स ऑफ एस्थेटिक कम्युनिकेशन. इट इंक्लूड्स आर्ट्स, डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक एक्सेट्रा. Artists convey their thoughts and ideas through the communication. Communication से अपना मतलब thoughts, ideas को exchange करते हो लोग. Artist. Appearance. Appearance is usually the first thing noticed about a person. कोई भी person का पहला चीज़ जो कि notice किया जाता है वो है appearance. It includes like way of dressing कैसा. A well-dressing groom is ready for function. Shabby clothes, etc. Dress code in office is generally formal for men like shirt, leather shoes, trousers, etc. For women, two-piece trouser or female like sari is permissible. Symbols such as religious status, ठीक है, ego building symbols. Visual या virtual communication. Visual communication through visual aids such as signs, typography, drawing, graphic design, illustration and other electronic resources usually reinforce retain communication. Visual communication is powerful medium that are used by print and audio visual media to convey their message. Formal and informal communication. Formal communication is both oral and written communication. It follows certain rules, principles, convention in conveying the message. The hierarchy in the nation is to be followed.
It is categorized into three parts. Vertical communication. It refers to communication can flow from upwards to downward. ये upward to downward flow करता है. In the organization, data that is collected from senior to subordinate for implementation in the organization called the vertical communication. Horizontal communication, diagonal communication, informal communication. Horizontal, it involves communication between two parts of the organization at the same level. Diagonal हो गया, it is also called as a cross functional communication. Diagonal communication refers to such communication where communication is done between the employees at the different levels of organization. चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो लोअर हो. It is common in large organization. It is called as diagonal communication. Informal communication is the friendly, casual, unofficial matter पर अगर कोई बात किया जा रहा है तो वो हो गया informal communication. It refers to such communication which does not prescribe any official rules and regulation, process and formalities in exchange of information. It is done between family, friends, neighbors. ठीक है. नेटवर्क इन कम्युनिकेशन वर्टिकल, सर्किट, चेन, व्हील, स्पोक और स्टार. ये नेक्स्ट वीडियो में होगा. ठीक है.